Good morning, children. Today we will do chapter 16, Our Green Friends, part 2. Yesterday we did the part 1 of this chapter, and today we will do part 2 of this chapter. So let's start. The shoot. The part of the plant that grows above the ground is called shoot. A shoot has stem, leaf, flower, fruit and vegetables. एक प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं, रूट एंड शूट. जो प्लांट का पार्ट ग्राउंड से नीचे ग्रो करता है उसको रूट बोलते हैं, और जो प्लांट का पार्ट ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है, ग्रोज अबव द सॉइल, दैट इज कॉल्ड द शूट. यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो. एक शूट के डिफरेंट जो हैं पार्ट्स होते हैं, स्टेम, फ्लावर, fruit and leaf. These are the different parts of a shoot. Number 1, stem. It carries water and food prepared by the leaves to all parts of the plant. The stem bears fruits, flowers, leaves, and buds. Now you can see here, the roots absorb the water and the minerals from the soil. रूट्स जो है सॉइल में से एब्जॉर्ब करती है वाटर और मिनरल्स को और लेके जाती है स्टेम तक. And then this stem, अब stem का function क्या है? This stem carries the water and the minerals to all the parts of the plant. और जो shoot है, जो stem है, you can see in the picture, stem के ऊपर you can see it, there are flower, fruit, leaf. ये लगे होते हैं. These are the parts of a plant. Next is leaf. Leaf is mostly the green part of the plant. The leaf prepares the food for the plant and therefore is called the kitchen of the plant. Mostly जो plants होते हैं उनके leaf green होते हैं और green leaf होते हैं. Only those leaf they can make the food for the plant. That's why leaf is called the kitchen of the plant or the food factory of the plant. You can see here, the leaf is green in color because there is chlorophyll present in the leaf. With the help of the sunlight, carbon dioxide from the air, and water, leaf makes the food. Carbohydrates is the food made by the leaf, and oxygen is released in this process when the leaf make the food. Next is Factopedia. Flowers like marigold, hibiscus, zinnia, etc. are used for making colors. These colors are used for dyeing the clothes. कुछ flowers हैं जैसे marigold, hibiscus, zinnia. इनको हम colors बनाने के लिए यूज करते हैं. ये natural colors होते हैं और इन colors से कपड़ों को dye किया जाता है. और these natural colors are expensive. The colors we make in the factories are made by using chemicals, or wo colors, they are cheap colors and harmful also. But the colors which are made from flowers, they are natural colors and they are not harmful at all. Pear and shea. Why are leaves called the kitchen of the plant? Leaves को हम kitchen of the plant क्यों बोलते हैं? ये मैंने आपसे last slide में भी discuss किया है. The leaves which are green in color, they make the food for the plant. That's why leaves are called the kitchen of the plant or the food factory of the plant. Next is flower. It is the most colorful and the beautiful part of the plant. A flower grows from the bud and produces fruit. एक प्लांट का सबसे सुंदर जो पार्ट होता है वो फ्लावर होता है. एक प्लांट के ऊपर कलरफुल फ्लावर्स लगे होते हैं और वो फ्लावर्स इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं एंड इट दे आल्सो सीम्स गुड फॉर अस आल्सो. हमें भी वो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं. सो एक प्लांट का सबसे कलरफुल और ब्यूटीफुल पार्ट जो है वो फ्लावर होते हैं. फ्लावर जो होता है वो बड से ग्रो करता है. इन द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी bud is there and the bud is opening and the flower, it becomes flower. So a flower grows from the bud. और जो फ्रूट होते हैं किसी प्लांट के ऊपर जब फ्रूट आने हैं उससे पहले फ्लावर आते हैं. Next is fruit. A fruit is the sweet and the fleshy product of the plant that has seeds inside it. A new plant germinates from the seed.
अब एक प्लांट का जो फ्लैशी पार्ट है, मीठा पार्ट है, फ्लैशी है, जूसी पार्ट है, उसको हम फ्रूट बोलते हैं. यू कैन सी सम फ्रूट्स हियर इन द पिक्चर. एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, ऑरेंज आर देयर एंड pear is also there. सो ये जो फ्रूट्स हैं दे आर द जूसी फ्लैशी पार्ट ऑफ द प्लांट, और वो मीठे होते हैं, और फ्रूट्स के अंदर सीड होते हैं, और इन्हीं सीड से न्यू प्लांट बनता है. व्हेन वी सो दीज सीड्स इन द soil, a new plant grows. And this process is called germination. You can see in this picture also, when we sow the seeds in the soil, by getting proper air, water, and sunlight, that seed grows and becomes a new plant. This is called germination. Here in this picture, we sow the seed and then a small plant grows, roots grows downward, and the shoot grows upward, and it bears the different parts of a plant. This is called germination. Next is types of plants. We see different kinds of plants around us. हम अपने पास आस-पास अलग-अलग तरह के प्लांट्स देखते हैं, और आज हम करेंगे कि वो डिफरेंट प्लांट्स कौन-कौन से हैं. Number one, trees. Trees such as Ashoka, Banyan, rubber, neem have thick and strong stem called the trunk. They live for many years. Trees होते हैं, you can see in this picture also. कई ट्री हैं, एप्पल, मैंगो, बनियन, अशोका, कई तरह के ट्रीज होते हैं. जो आपको दिखाई दे रहा है, दे आर टॉल, वो लंबे होते हैं, देखने में ऊंचे होते हैं. उनका जो स्टेम है वो थिक है. यू कैन सी हियर द स्टेम इज थिक. Apple tree, the stem is thick. Mango tree, the stem is thick. And the banyan tree, the stem is thick. This thick stem is called the trunk of the tree. Trees are tall in height and they live for many years. Next is shrubs. Shrubs such as jasmine, rose, and hibiscus plant have thin stems which are woody. They hold the plant upright. कुछ plants हैं जैसे कि जैस्मिन, रोज, हाइबिस्कस. जैस्मिन को हिंदी में चमेली बोलते हैं, रोज को गुलाब बोलते हैं, हाइबिस्कस को कनेर बोलते हैं. ये कुछ प्लांट्स हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज मेनी अदर प्लांट्स आर देयर विच आर श्रब्स. दीज प्लांट्स दे हैव थिन स्टेम्स. इनके जो स्टेम्स होते हैं वो थिन होते हैं, बट वो वुडी होते हैं. उनमें लकड़ी होती है. दे आर वुडी प्लांट्स, और वो प्लांट को सीधा रखते हैं. जो श्रब्स हैं दे गिव द बुशी अपीयरेंस. वो एक बुश की तरह दिखाई देती हैं क्योंकि उनकी जो ब्रांचेस हैं वो उस ग्राउंड के साथ ही स्टार्ट हो जाती हैं. सो श्रब्स आर स्मॉल मीडियम साइज प्लांट्स. Next is herbs. Herbs such as tulsi, coriander, mint have very soft stems. They do not grow very high from the ground. अब herbs जो होती हैं, एग्जाम्पल के लिए तुलसी है, कोरिएंडर है, मिंट है. कोरिएंडर धनिया, मिंट पुदीना, तुलसी. ये जो प्लांट्स हैं इनको ये हर्ब्स के कुछ एग्जांपल्स हैं. हर्ब्स जो होते हैं दे आर स्मॉल प्लांट्स. ये प्लांट्स छोटे होते हैं हाइट में, और उनका जो स्टेम होता है वो सॉफ्ट और वीक होता है. एंड द स्टेम इज नॉन वुडी ऑल्सो. Next is creepers. Creepers are weak plants that grow along the ground. For example, watermelon and pumpkin. Creepers वो प्लांट हैं जिनके स्टेम बहुत वीक होते हैं. You can see in the picture. The stems are very weak, but the fruit is very happy. Sorry, but the fruit is very heavy. राइट. सो स्टेम्स आर वीक. दे कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट. स्टेम सीधा ऊपर की तरफ खड़े नहीं हो पाते. वो जमीन के साथ साथ ही क्रीप करते हैं, ग्रो करते हैं, बिकॉज द फ्रूट इज हैवी एंड द स्टेम इज वीक. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, बिकॉज दे क्रीप और ग्रो अलोंग द ग्राउंड. You can see here watermelon is there, pumpkin is there, apart from these melon is also there. These are some creepers. Next is climbers. Climbers grow along the trees and poles. They cannot stand up by themselves. They need support to grow upright. For example, money plant, bottle gourd, pea, and grapevine.
जो क्लाइंबर्स होते हैं उनके जो स्टेम हैं उनके जो स्टेम्स हैं वो वीक होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो मनी प्लांट एंड ग्रेप्स। आई हैव shown the pictures also. These climbers also have weak stems. If they but they can grow upright. वो ऊपर grow कर सकते हैं with the help of a support. In the first picture, you can see the climber is climbing up with the help of a support. So money plant climbs up with the help of a support, along with the tree, or if you fix a pole or the stick, the plant curls around that stick and it grows up. Similarly, grapes are also climbers. With the help of the sport, they can climb up. Next is, how do plants make their food? Plants अपना food कैसे बनाते हैं? Green plants make their food with the help of the water, air and sunlight. The leaves make the food for the plant. They are called the food factory or the kitchen of the plant. This process of making food by the plant is called photosynthesis. A part of this prepared food is used by the plant, and the leftover food is stored in different parts of the plant, such as fruits, roots, leaves, and stems. अब प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, इसमें हम देखेंगे कि ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर फूड बिकॉज फॉर मेकिंग द फूड chlorophyll is needed and only green leaves have the chlorophyll. So here the plants, they take the air, carbon dioxide from the air, energy from the sunlight, and water from the roots or absorbed by the roots. And chlorophyll is present in the leaves. They make the food, and the process is called photosynthesis. So this was all for today. Thank you.